Hello students. So now in this lecture video we'll try to understand the GST and our law, or you can say the constitution provisions कि GST को कैसे हम एक्चुअली में implementation phase में लेकर आए in our constitution or in our law system. Okay, so now for that you have must the precondition for this thing that you must be knowing about the Indian federal structure, federal financial relationship under which taxing power has been divided between state and सेंटर कि सेंट्रल को कुछ टैक्सिंग पावर है, स्टेट को कुछ टैक्सिंग पावर है. ओके, सो नाउ अवर जीएसटी एंड लॉ सिस्टम इज समथिंग लाइक दिस. दीज आर द few bills which were involved for making the GST functional. Okay, one is the our constitution bill, the constitution amendment bill 101st. Okay, so 101st amendment of the constitution is which where the both state and center has played the role. Center basically Modi, no, I should not say the Modi government. Center basically parliament, and the state basically your state legislative assemblies. Then we are in the state government and services tax. Okay, which is by the state government. And then we have the central government and services tax, integrated uh, goods and services tax, IGST bill or IGST act should we said, union territories government and services tax, UTGST, GST compensation to the state. So all of these bills are involved to you can say to facilitate to work with the GST bill को काम करने का लिए. Now first we look at the uh, amendment bill. So all other bills are nothing but, for example, SGST bill is nothing but your state government and services tax bill or tax act is nothing but he is implementing that कि हर state में इतना इतना SGST रहेगा. Okay. Similarly, CGST saying that this must be the CGS, it's not tax. IGST is saying that this is must be the IGST tax. These things will be under the IGST tax. This will be outside IGST tax. UTGST for union territory. Government and services tax compensation of the state is basically it's an act under which some compensation levies has been done, means compensation has been charged, compensation tax has been charged from the people, so that they can compensate to that state which are not which are getting negatively affected by the GST. We will talk about the GST, so this compensation wala part. Okay, so apart from that everything should be very much clear, that your amendment and other things. सो अगर आपको पता नहीं लग रहा है, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट कि एक्ट वैक्ट सब क्या है, तो लुक एट द इंडियन पॉलिटिकल सेक्टर. ओके, जिसमें इसको वेरी ब्रीफली वे से इट हैज बीन शोन दैट everything which the government is doing that has to be approved by the parliament through the bills. Okay, so that is has been explained into the Indian political part. Now अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि कितने बिल्स हैं. फॉर द एग्जाम परस्पेक्टिव दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. कितने बिल्स हैं, कौन से बिल्स हैं, दिस द थिंग. द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी अमेंडेड. कॉन्स्टिट्यूशन यू शुड अंडरस्टैंड इट्स our rule book type of thing. Okay, so of Indian political system. Now constitution को क्यों अमेंड करना पड़ा जीएसटी में. so if you look at our political system, so there in our constitution आपका taxing power has been very much bifurcated between the state and the center. Okay, कुछ taxes हैं जैसे कि जिन पे दोनों central state is having the say. For example, if you see that uh, सेल्स टैक्स है, सेल्स टैक्स इज टोटली इन द हैंड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट सेल्स टैक्स नहीं कह सकती. सिमिलरली एक्साइज ड्यूटी है, मैन्युफैक्चरिंग पे जो ड्यूटी लगता है एक्साइज टैक्स है, दैट हैज बीन अंडर द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट से एनीथिंग हियर. सो नाउ through the GST we are replacing many of the indirect taxes. Some indirect taxes are of the state government, excise duty, manufacturing bar. Some indirect taxes are for the state government, like VAT was under the state government. तो वो पावर आप स्टेट से छीन रहे हैं, replacing many of the indirect taxes with the GST, either SGST or CGST or UTGST. Now VAT is for example replaced by the SGST. Now SGST rate, one thing is that तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हैं कि स्टेट से पावर छीन रहे हैं to levy the taxes. Okay, another thing is that जो भी स्टेट टैक्स लगाता है, ओके, सो दैट इज इन द हैंड ऑफ द स्टेट ओनली कि इतना टैक्स रेट होना चाहिए. बट SGST is now being decided at you can say that is being decided at the सेंट्रल प्लेस, और मीन्स हर स्टेट में सेम टैक्स हो, इसके लिए एक सेंट्रल प्लेस पे SGST डिसाइड कर रहे हैं. ओके, सो नाउ अगेन SGST इज लूजिंग देयर ऑटोनॉमी. सो नाउ दिस इज नथिंग बट यू कैन से दैट कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आप चेंज कर रहे हो, उसके साथ खेल खेल रहे हैं. ओके, सो दैट ट्राई कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी चेंज फर्दर. कॉन्स्टिट्यूशन में तो चेंज हो ही रहा है. फर्दर अनदर थिंग व्हाट यू आर डूइंग, यू आर चेंजिंग द फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, फेडरल रिलेशनशिप. बेसिकली स्ट्रक्चर तो नहीं कहना चाहिए, फाइनेंशियल रिलेशनशिप, फेडरल फाइनेंशियल फेडरल रिलेशनशिप आप चेंज कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि अर्लियर जो टैक्स स्टेट गवर्नमेंट पे कर सकता था, डिसाइड करता था, दैट इज बीइंग डिसाइडेड एट द सेंट्रली. ओके, सो दैट्स व्हाई इट्स अ
not only constitution amendment bill, but it's a constitution amendment bill uh, where the फेडरल रिलेशनशिप आर चेंजिंग, तो स्टेट गवर्नमेंट का भी सही चाहिए. अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल एक्चुअली होता क्या है क्या नहीं होता है, फॉर दैट यू शुड लुक एट द इंडियन पॉलिटिकल लेक्चर, देयर यू कैन इजीली फाइंड दैट दिस थिंग. तो चेंजिंग, यू आर चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी चेंज करना पड़ता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बारिंग अ फ्यू केसेस, ओके, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होता है तो उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल. अगेन आई एम रिपीटिंग, हर चेंज कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल नहीं बोलते. फॉर एग्जांपल कल हरियाणा का और यू कैन से महाराष्ट्र को तोड़ के दो राज्य बना रहे हैं, ओके, दैट इज महाराष्ट्र बाइफरकेटेड इन टू स्टेट्स, सो दैट इज नॉट बीइंग क्लासिफाइड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ओके, और तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होगा. तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जब हम बोलते हैं तो देयर आर स्पेशल केसेस वेयर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जब भी होता है, दैट हैज टू बी approved by the parliament, not simple majority but special majority. What does that mean? Ki whatever is the strength of the parliament, irrespective number are people are present or not, whatever is the strength of the parliament or upper house or lower house, at least 50% of the people should say yes for that particular change in constitution, and two-thirds of the person who are present and voting, they should say yes. Okay, again special majority very much explained into the Indian political sector, there you can refer it. Now another thing is, you are changing the federal structure of the of country. Now for that you have to get the approval from the constitution units. Constituting unit basically states से आपको approve लेना पड़ेगा, at least more than half states. Okay, for example we are presently having 29 states, so you have to take the approval at least 15 states. 15 states should say yes, we are ready to take this GST bill. Okay, so only then you can change that constitution. So that has been done, successfully done now, but taken up a lot of time. Although timeline में 2003 से represent करो, but before that in 1999 also there was a one of the committee under Lal Krishna Advani which has for the first time went to some foreign country to study the GST, but for us it is not that important go to that far, but even this 2003 is also a little bit far. So now 2003 में you have the Kelkar Fiscal Consolidation Task Force which has recommended the GST, and they have proposed to introduction of the GST. Now 2006 for the first time Congress government has proposed to introduce the GST. 2008 plan to launch in 2010. Then 2009 comes. 2009 में empowered committee of the state finance minister has been assigned the task to build this जो भी draft of the GST bill. Okay, so now draft of this constitution, जो भी GST को करने के लिए जो भी constitution में change चाहिए, जो भी GST bill चाहिए, उसके लिए बनाया गया empowered committee of state finance ministers. Okay, further 115th amendment introduced in 2011, that is it was the 115th amendment bill. Remember, it was a bill. बिल का मतलब होता है अभी तक प्रपोज किया हुआ है, अभी एग्री नहीं किया है पार्लियामेंट में. तो कॉन्स्टिट्यूशनल 115th amendment bill is being introduced into the parliament, but Lok Sabha elapsed in 2011. सॉरी 2013 में लोकसभा लैप्स हो गया, तो ये बिल भी पानी में चला गया. ओके, 2011 में इट वाज इंट्रोड्यूस्ड. नाउ 2013 में फिर 14 में अगेन it was reintroduced as a 122nd constitutional amendment bill. Remember, it has been introduced as a bill जो कि 122वें नंबर का था. Okay, but जब it was cleared, when it was passed, at that time it was constitution में 101st amendment bill था. सॉरी चेंज था, अमेंडमेंट था. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स लाइक दिस कि कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक 122nd अमेंडमेंट बिल आ चुके थे, बट कुछ अमेंडमेंट हुए होंगे सक्सेसफुली, कुछ नहीं हुए होंगे. तो ये जीएसटी 101st सक्सेसफुल अमेंडमेंट कर पाए कॉन्स्टिट्यूशन में. तो दिस वाज हैपन इन 2016. देन कम्स द 2017. इट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम जुलाई 1 2017. तो अब जुलाई 1 2017 तक लॉन्च हुआ है. तो रिमेंबर दैट जीएसटी के लिए यू आर हैविंग द अदर 4 बिल्स एज वेल. वन इज योर यूटीजीएसटी, सीजीएसटी, compensation GST which is under the compensation bill which is under the union government, वो तो पास हो गया था. another thing, each state has to pass a its own SGST. हर स्टेट को अपना SGST पास करना, SGST बिल पास करना था. सो जुलाई 1 2017 तक जम्मू एंड कश्मीर ने SGST बिल पास नहीं किया था, बट जुलाई 7 2020 to July 7 2017 they have passed. So on July 7 2017 you can see that all of the states is now having the GST properly enacted. Okay, so अब पूरा तरह से वो हो गया, मतलब GST was launched or GST was started to implement it. So this is the timeline. So what is important for the exam in this timeline? Your
one is 2013 का केलकर कमेटी is important. Further, which state is the last state to join the GST bill and when it was launched. Okay, and one more thing is that it was the which constitution amendment bill. Okay, so it's although written both house clear the bill as 100 constitution amendment. So it was the 100 it was the 101st constitution 101st change in constitution, that is 101 बार change था, but it was introduced as 122nd, okay, as amendment bill. Now this is about the GST timeline. Now another thing is that अब इसको जैसे कितना टैक्स किस पर लगेगा कितना लगेगा, for that we are having the GST Council. Remember here you are earlier what was happened, for example if you take the example of Rajasthan, so Rajasthan में कितना sales tax होना था, that would be decided by the Rajasthan government. Now what you are doing, you are implementing all of the states should have the same tax which is SGST. Okay, SGST होना चाहिए सभी states पे, state tax का बात करें. For that what you are saying कि राजस्थान अपना अलग नहीं जा सकता, महाराष्ट्र से अलग नहीं जा सकता, they have to come together to decide one of the tax. So now for that we are having the GST Council, which is just Government and Services Tax Council. This is the important council to make this decision. So now let's understand this constitution. GST Council is the governing body of the GST. Now further, who appointed? It is appointed by the President of India. Next is who are the member of this GST Council. Okay, first member is Finance Minister, who is chairman of this GST. Remember, this is very important thing. Who is the chairman of the GST Council is the Finance Minister, not the Prime Minister. अधिक तो तुम्हारी meeting का Prime Minister रहेगा, but here Finance Minister is the chairman of this meeting. Now, Union Minister of the State, who is the in charge of the revenue of the finance. Okay, that is if you know about the politics, so little bit of ministry, तो Finance Minister रहता है, उसके अंदर State of State sorry योर स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहता है. ओके, मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहता है एट द सेंट्रल लेवल. ये ऑल्दो स्टेट नाम लिखा, स्टेट यहाँ पर नेशन को रिप्रेजेंट करता है. यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स रहता है विच इज वन रैंक बिलो द फाइनेंस मिनिस्टर. सो हेयर he is the in charge, whoever the your minister of state, whoever is the in charge of the revenue of the finance, he is the another member, he is the just a member. Next is all of the state is also having the representation. Her state say at least her state say either their finance minister or whoever is the in charge of taxation or any other minister which is nominated by that state, that person is also being present. So you can say that every state is having some person who is having the some रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंस टैक्सेशन और जो कि नॉमिनेट करेगा बाय इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट है. हरियाणा का एक अपना पर्सन जाएगा, राजस्थान का अपना जाएगा, महाराष्ट्र का अलग जाएगा. दिस इज अ थिंग. एंड आई थिंक द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट इन चार्ज ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द फाइनेंस. ओके, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, थर्ड इज द फाइनेंस मिनिस्टर. तो दीज आर द पीपल इन दिस जीएसटी काउंसिल. नाउ अब जीएसटी काउंसिल का जितना भी मीटिंग होता है, दैट मीटिंग विल बी कॉल्ड मीटिंग ओनली इफ एटलीस्ट 50% ऑफ द पीपल आर कमिंग. ओके, ओनली देन इट विल बी कॉल्ड एज अ मीटिंग. अदरवाइज व्हाट यू विल से दिस मीटिंग इज नॉट. कोरम का मतलब होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ पीपल विच आर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग एज अ मीटिंग. फर्दर whatever the decision GST Council take, that decision should be approved by at least 75% of the member present and voting. Again, whatever the number of member, उसमें 75% जितने भी प्रेजेंट हैं उनका 75% if they say yes on that particular decision, only then that decision would be agreed. For example, कल कहते हैं कि सिगरेट पर टैक्स बढ़ा दो और सिगरेट पे टैक्स कम कर दो. लेट्स से दे से दैट रिमूव द टैक्स ऑन द सिगरेट, रिमूव द टैक्स ऑन द टोबैको प्रोडक्ट. then if 75% is agreeing on that thing, only then they can do. GST council के हाथ में power है, but they can only do if 75% members, that majority of 75% of the members की बजाय इसको होते हैं weighted vote is member. Okay, what does that mean? Basically each member is not having one voting power. Okay, so for example center के जितना representation है, there is 2 representation, उनका voting power होगा 1/3. It's not third 13 पता नहीं whatever it is, 1/3 कि 1/3 person is 1/3 voting power is in the hand of the your central and 2/3 power is in the hand of the state government. Okay, so here it's little bit like यहाँ पर होना चाहिए था decision to be taken by 75% of the weighted voting power. Okay, because each member is not having the one voting power. Okay, so this has been for example if GST just an example, इस number sensitivity नहीं है, से टोटल मेंबर है स्टेट के 30, सिंपल लेते हैं 30, सेंटर के मेंबर है लेट्स से 3. ओके, ऑल्दो 2 है लेकिन हम 3 ले रहे हैं जस्ट टू मेक द थिंग क्लियर. तो टोटल हो गया 33. नाउ टोटल वोटिंग 33 होगी, बट पावर अलग अलग है. दीज पीपल आर हैविंग द 2/3 पावर ऑफ रेटिंग. ओके,
तो 2/3 पावर that is total voting power 33 है, तो these people are having equivalent vote of 2/3 into में 33, that will be nothing but 22 voting power. Okay, whereas these people are having 1/3 voting power. What does that mean? That is, they taken together they will be having the voting power of 11. Okay, so this is the what does that weightage voting power is concerned, that you should, मतलब इतना complicated तो मैं नहीं जाना, तो you should understand that it's a 70% of the weighted voting power should approve some change, only then that change will be agreed. This is about the GST Council. Okay, so GST Council function क्या होंगे? It's basically all administrative and executive aspect of the GST administration. Means GST को implement करने के लिए whatever the things are required, that is being done. Further, how much tax should be there, how much cess should be there. Okay, what should be the threshold limit, what should be the threshold limit, basically is the amount of earning which a company's amount of earning of a company. If it is earning more than that threshold limit, only then it will be comes under the GST. For example, presently it is 20 lakh rupees. कि अगर आपकी income 20 lakh से ज़्यादा है तो you will 20 lakh से कम है तो you will not come into the GST regime. So this is decided by the GST Council. कल GST Council से 10 lakh कर सकता है. Okay, so this is the thing. Uh, now how should IGST should be shared? So all these things are the GST Council functions. Okay, so now next is state compensation. So state compensation के लिए we have seen that there is one bill for the compensation thing. So what does that thing? That is, it will compensate for the 5 years for the loss of revenue. Okay, so finance commission में भी it has been represented, it has been shown finance commission वाले lecture में. It basically means that कुछ states को GST से पहले let's say 100 rupees का revenue रहा था. Okay, now उनको let's say 80 rupees का revenue रहा है. तो this 20 rupees is called a shortfall or loss of revenue. This 20 rupees will be paid by the central government to the state government. Okay, so not in the beginning it will be 100% for the 3 years, then 50%, then there is a certain amount of declining trend. So for us what is important, ki whatever is there is a gap, that is your shortfall, and that would be paid by the central government to the state government. Okay, and only 2015-16 का let's say 100 rupees हुआ 2015-16 में. Okay, so now let's say this year किसी state का you can say that let's say some state is having 100 rupees of tax, and this year, that is 2017-18 में, let's say they are earning let's say 100 rupees. Okay, so how much would be the your state loss? First of all, you have to do the 100% का 14%, that is 114. Again, then 114 का again 14%. So whatever the number will come, that number will subtract from the 100, that would be the state loss, and that would be compensated by the central government. Okay, so this is what is the compensation cess will finance it, that is the जो GST compensation bill हमने पढ़ा था, that is being decided in that, has been mentioned to that GST compensation bill, through which you will get some compensation cess, and that compensation cess will be utilized by the central government to pay the state government. Now next is your GSTN. GSTN is again an implemented, you can say कि जो भी network system is required, that is being maintained by the GSTN. Important thing क्या है यहाँ पर, that GSTN is not as such any government company, it's a basically a private company. Okay, and further shareholding of GSTN is something like this: 49% is by the government, 24.5 by the central government, 24.5 by the state government, and rest of them is by the private corporation. Okay, that is GSTN का network. And वो network के लिए जो भी background network चाहिए, identification जो जितना भी network चाहिए background, that all being maintained by the GSTN. For the GST Suvidha provider is there. GST Suvidha provider is basically again by GSTN only, that is to facilitate like your Suvidha is nothing but comfort. GST को comfortably you can do the thing. So whatever the guidance is required, that is given by the GST Suvidha, your GST Suvidha portal. Now GST benefit, अब इस benefit को list करने का कोई मतलब नहीं है, that is you know that less corruption, less cascading effect, so more people will be very much happy. Okay, so more business will expand, people will do more business because less taxes are there. So these are things, but these are the thing which this ये तो अच्छा है, everybody can do this. Another thing which is little bit different here, one is the excuse me, encourage the outsourcing, तो स्पेशलाइजेशन को encouragement मिलेगा, एंड इससे MSME को बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा ड्यू टू GST, दैट यू शुड, अगर इट्स नॉट MCQ में ऐसा तो नहीं पूछेंगे, बट इन द मेंस एग्जाम और इन योर इंटरव्यू और इन essay it can be very much beneficial कि encourage the outsourcing. How it will encourage the outsourcing?
So you can look at the one of the negative effect of your uh, negative effect of your senvet. Okay, so your negative effect of your excise duty, cascading effect of excise duty. So same way यहाँ पर भी अगर जीएसटी नहीं रहता तो people want to become in-house expert for everything. Okay, to remove that thing you are having a GST thing. Now specialization will be encouraged. जिसको टायर बनाना आता है वो टायर ही बनाएगा, जिसको सर्विस बेचना आता है वो सर्विस ही बेचेगा. Okay, rather than becoming a master of all trade. So that you can look at प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने सैंडविच को डिस्कस किया. फर्दर इट विल बी एफिशिएंट द लॉजिस्टिक. ओके, उसमें ई वे बिल है और ई वे बिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्पल बिकॉज इट्स अभी न्यूज़ में काफ़ी रहा है, तो विल स्टडी अबाउट द ई वे बिल. तो नाउ बिफोर दैट प्रेजेंट जीएसटी स्ट्रक्चर इज लाइक दीज आर द वेरियस. अब 28% में तो बहुत ही कम चीज़ें रह गई हैं. ओके, सो दिस आर द ओन थिंग्स विच वेयर दिस इज नॉट एप्लीकेबल, like on the petroleum product it's not applicable, electricity is not applicable, alcohol is not applicable. But as already explained in this video itself कि अल्कोहल को अगर इंक्लूड करना है जीएसटी में तो कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा चेंज करना पड़ेगा. बट फॉर पेट्रोलियम इलेक्ट्रिसिटी जीएसटी काउंसिल के ऊपर है कि वेन एवर दे वांट दे कैन डू दिस. नेक्स्ट इज योर नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी हैज बीन मेड. एंड नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी क्या करता है, बेसिकली दिस इज रिस्पॉन्सिबल कि जो भी जीएसटी के कट करने की वजह से जो भी प्राइस रिड्यूस हो रहा है that should reach to the end consumer. Okay, but if it is not reaching to the end consumer then this anti profiting authority can take the action. For example, yesterday गवर्नमेंट ने रेस्टोरेंट पे सॉरी नॉट yesterday, दैट इज कभी गवर्नमेंट ने रेस्टोरेंट पे 28% से टैक्स कटा के 5% कर दिया. ओके, तो नाउ आई कैन गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर रेस्टोरेंट मान लो मुझसे अभी भी 28% टैक्स वो कर रहे हैं, तो आई कैन गो दिस नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी एंड आई कैन टेल हिम कि मेरे साथ गलत हो रहा है, प्लीज डू समथिंग, एंड ही हैज़ टू टेक द डिसीजन विद इन 3 weeks.